Dear students, for most of the firms, storage costs is a certain variable that they need to consider because if they want to decrease the cost of production, they have to consider the cost of storage. And the function of the storage should be understood. And for that, integration can help us. Let us see how we can analyze the storage cost function by using the integration. We are considering a certain situation where there is a retailer and he has a certain cost function. The statement of this function is explained, and you can pause the video and read it. But this already built function is there for us to solve. Now, it is dependent upon time, and as the time changes, it is going to have effect on the storage cost. How much will the retailer pay in storage cost over the next 5 months? So this is what we want to know, that how much he will pay for if he uses the storage, and what will be the cost for that if he stores the things or the products that he has for the next 5 months. And for that we need the function, and we are not given the function. We are given the marginal version of it. That is why we are going to integrate the given function, and the given function is this. And once we integrate it, it will look something like this. इसकी इंटीग्रेशन मैं आपके लिए एक रिहर्सल रख देता हूँ. सिंपल इंटीग्रेशन है जो हम कर चुके हैं. इसका हम फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं. In this result you can see that this is the general function because इसके अंदर arbitrary constant है. Remaining terms, they are in terms of time. Yes, they are, because over the time the storage cost will change. Now we want to convert this general notation into a specific notation or a certain value, and that can be done if we introduce the initial condition जो हम पहले भी कर चुके. So we introduce t is equal to 0. And when we do that, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आपको नज़र आ रहा है कि हमने 0 सब्सटीट्यूट एंड c इज इक्वल टू s नॉट. सो ये हमारे पास c की वैल्यू है. ये s नॉट की जो वैल्यू है इसे हम इनिशियल लेवल ऑफ स्टोरेज और स्टोरेज कॉस्ट कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द स्टोरेज कॉस्ट व्हेन नो टाइम हैज़ पास. इसे हमने सब्सटीट्यूट किया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया. लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि हमने एक और स्टेप किया है जो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट करके एस नॉट नहीं लिखा, बट यू कैन राइट. बट आपने ये देखा होगा कि एस नॉट अब विजिबल नहीं है, एंड दैट इज़ बिकॉज अभी टाइम गुजरा नहीं है. जब कुछ टाइम गुजरेगा फिर ही कोई कॉस्ट आएगी. देयर विल बी सम प्रोडक्ट्स और गुड्स इन दैट स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पर कुछ टाइम गुजरने के बाद कुछ उन्हें चार्जेस पे करने पड़ेंगे. सो नो टाइम हैज़ पास्ड एंड देयर इज़ नो स्टोरेज कॉस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम विच इज़ नाउ, विच इज़ द वेरी बिगिनिंग. देयरफॉर हमने एस नॉट इस स्टेप में नहीं लिखा, जो आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं और उसमें अगले स्टेप में आप ज़ीरो लगाकर उसको गायब कर सकते हैं. सो ये हमारे पास डेफिनेट सोल्यूशन बन गया स्टोरेज कॉस्ट फंक्शन का, जिसे हम मज़ीद डिटेल में समझ सकते हैं. बिकॉज आपको याद होगा दैट इन द क्वेश्चन आवर मेन रिक्वायरमेंट वाज टू फाइंड आउट द स्टोरेज कॉस्ट इफ 5 months have passed. So let us bring that detail. And before we do that, we have a little bit of information regarding the shape of the storage cost function. This is the function that we developed, and if we plot it, where time is the independent variable जो x axis पे आएगा, और retailer storage cost जो है वो as a dependent variable y axis पे आएगी. आपने देखा कि जो storage cost है वो over time बढ़ रही है, लेकिन afterwards it is declining. So initially, the goods are increasing and there is an increase in the storage costs. Now, the requirement or the scenario that was there was about t is equal to 5. t is equal to 5. हमने जहाँ पर t का वेरिएबल है वहाँ पर 5 सब्सटीट्यूट कर देना है, सो दैट हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए फॉर 5 मंथ्स. तो आपने देखा जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने 5 को सब्सटीट्यूट किया और फाइनली वी गॉट दिस आंसर दैट इज शोइंग अस कि जो स्टोरेज कॉस्ट है ड्यूरिंग द 5 months दैट विल बी दिस, दैट इज $250. That will be the storage cost after we have spent 5 months while the things are stored in the storage facility.
So in this way, one of the components of the total production cost, that is the storage cost, is analyzed by using the integration. Thank you.